सॉफ्ट सस्पेंशन पे रखी हुई है। सही है इसको इसमें छोड़ दो इसी। हाँ सही है। ऊपर है ओके, दिस इज वेल कवर्ड, लेकिन घुटनों में ना अंदर कुछ नहीं है। इसके नीचे भी मैं ये पहना। हां तुम्हें नहीं पता चल रहा ना, हालांकि मैं लाइनर पूरा सूट लेके आया हूं अंदर, लेकिन ओके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। क्या क्या चीज सिग्निफिकेंट लगी तुम्हें इसकी? स्मूथनेस। हां स्मूथनेस तो है और इस निम्बलनेस। अब उसका इसमें भी हो, लेकिन यू कैन इजीली अबे ये तुम पागल हो गए थे इसको चला के तुम। हां मुझे याद है मुझे, लेकिन दिस इज आल्सो वेरी बिल्कुल जैसे तुम्हारी पूरा वो थी ना पहले 1600 जो थी, इट्स वेरी 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 सिमिलर कैरेक्टर टू दैट। हां सिमिलर। नहीं मेरे पास ये लो तो लेकिन इसका जो डिमीनर है, और स्पेशली जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं हां तो इसकी F1 टाइप की साउंड आती है। या वो इसका अपना एक अलग मजा है। ये देखो मैंने टेम्परेरी टाइप कर दिया, मैंने कहा ये तो मैं नहीं लगाऊंगा, पर प्लेट तो ये है इसकी ट्रांसफर होगी तो। अच्छा कोई ड्रैग वाला कुछ नहीं था ऊपर, जस्ट आई हैड नो इश्यूज, हाथ वाथ सब बस डाउन ओवर हियर। तो भाई वो तुम नहीं ऑब्वियसली यार सर्दी इज लाइक कितना 30s में होगा टेंपरेचर वाला 34। हां तो विंड चिल इज प्रॉब्ली 20 डिग्रीज कम कर दो। हाँ भाई इधर आके बता दीजिए अपने तासुरात। आपकी कवरेज हुई है सारी? अच्छा हुई है। नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छी बाइक है, और इसकी खुसूसी चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इट्स वेरी डिम्बल एंड वेरी इजी टू मैनूवर, राइट, इवन फॉर अ फर्स्ट टाइम राइडर। सो आई थिंक इट हैज मेंटेन्ड इट्स कैरेक्टर। हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन राइडिंग इन दिस टेम्परेचर विदाउट द गियर?
Well, you know, like on my torso and higher, it was great, but below that, I had nothing in there. So there is not much I can say, but I think it had very good, basically wind protection, and I think it did what's supposed to do. Yeah, You know, I okay. wish we could have better weather and Yeah, you know, yeah. enjoy the curves more. But And yeah. if you had more time, and the good thing, it's as heavy as it is, but when you're riding it, it doesn't feel that heavy at all, Yeah, it right? just I mean, disappears. That's it's one just of the- like floating on water. yes, yes, Yeah. and this is the unique thing about the Yeah. K1600. But then I still have that number one question for you. Why would you have both bikes, the R1300 and the 1600 GT? Because R1300 is the best in my humble experience. And this is not the best. No, all-round bike. Let me finish. Uh-huh. All-round bike. If Okay. I have to do a light off-roading in that, Yeah. I can do. Yeah. Depending upon the skills, you know, I can do that. On this one, yeah, I mean, gravel road and all you can do on any bikes. But it's just like, this is a luxury bike, you know. Mm-hmm. So it doesn't surprise you with all the luxury that it provides you. Right. That surprises you with the amount of luxury and the wind protection that it has. So for long-term commuting, both bikes are similar, to be honest with you. I love both of them. But eventually I'm planning on keeping one. That would be the thing. Yeah. So if you like this one, let me know. Sure. All right. You gonna give it to me for free or what? There's not even poison that is available for free these days, you know. So this is the joy of your life. So, but anyway, Alhamdulillah, good bike, good ride, good short ride. yeah, Yeah, like yeah, that. we could have gone to the highway if. No, the weather doesn't permit that. Yeah. Inshallah, next time. Inshallah. All right, take care. Excellent.